अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द हैदर रिफात शो और मैं हूं आपका होस्ट हैदर रिफात। आज के एपिसोड में जिनको मैंने दावत दी है, शी इज सनम जंग. She has come a long way in her career as an actor, and there are very few people who can dabble with different things, and she has also really established a name for herself in the talk show realm as well. So thank you so much, Sanam, for joining me. It's a pleasure having you on the show. Thank you, Haider. It's lovely being on your show. Thank you, Sanam. Okay, now before we jump straight into what we're going to talk about, the state of women's rights is quite upsetting across the country. हम जानते हैं, and you're familiar with this, rape cases make headlines all the time. और अभी जो recent नूर मुकद्दम का जो case हुआ था, जिसके अंदर she got slaughtered, beheaded. So as a woman, being a woman, what is your take on this women's rights crisis? I mean, क्या हम चीज गलत कर रहे हैं as a society, as a government, as a country, to be very honest? To talk on women's right crisis, you don't really have to be a woman. It's basic. It's any and every human would understand कि जो कुछ हो रहा है औरतों के साथ, और रिसेंटली सिर्फ अभी नहीं हो रहा, अभी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, पहले भी हो चुका है. अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, people are talking about it, people are not letting it go, people are constantly putting those hashtags and reminding people that hey, this needs to be looked upon, this somebody needs to work on this. So it has been happening since a long time, but now that everybody has the keyboard and everybody can type and people have a say because of social media, तो चीजें ज्यादा सामने आ रही. और जो भी recently हुआ है वो उससे तो literally I have a little daughter, सही है. So all those people who have kids, they completely understand कि नूर के parents कितनी बड़ी अजियत, कितना मुश्किल वक्त से गुजर रहे होंगे. और ना सिर्फ नूर, honestly मुझे डर लगने लगा है, you know, कि मैं घर में अकेली हूँ. हर एक लड़की को इस केस के बाद जनरली डर लगने लगा है. आप अपने सराउंडिंग्स में डबल चेक कर रहे हैं. You know people around you, are they okay to hang out with, are they safe people? और मुझे दूसरी बात ये लगता है कि देखिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना बहुत जरूरी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू जस्ट टेक एन एक्शन नाउ इंस्टेड ऑफ मेकिंग हेडलाइंस इन न्यूज कि अब ये हो गया, अब वो हो गया. Yeah, it's a complete open and shut case, just this guy needs to be hanged. And I believe कि जो भी औरत के साथ ज्यादती करता है, generally भी ज्यादती करता है, उस इंसान को फौरन से सजा दे देनी चाहिए. Taking these cases to the court and then उसमें delays होते हैं और क्या नहीं होता. हम सब जानते हैं कि हमारा judicial system कितना effective है या नहीं effective है. तो मेरे ख्याल से कि अब वो वक्त आ गया कि आप फौरन सजा दे, ताकि लोग ये सोचने से पहले कांप जाएं. बिल्कुल. अभी तो बहुत आसान है ना, कोई भी किसी को भी कुछ भी, मतलब पहले just how did it start off, मतलब how? I remember you're privileged to be a man. You don't know how it feels being a woman walking around on the street and somebody throwing their numbers at you or calling you some name or maybe singing a song while you're walking and you're not sure, is that guy really singing that song because I'm passing by, or is it just, you're just always confused. That's good. So it is us. We've been through it. We know how it feels and it's pathetic. So this thing, it needs to be stopped. पहले आप मजाक में करते थे, कभी किसी ने नंबर फेंक दिया आपके ऊपर, कभी किसी ने फॉलो किया आपको, आहिस्ता करके चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना. अभी फाइनल एंड रिजल्ट हम सब देख रहे हैं कि कहाँ तक आए. ये चीज उसी वक्त रुक जानी चाहिए. हम लोगों को भी फौरन कंप्लेन करनी चाहिए. इट्स नॉट ओके कि कोई आपको फॉलो कर रहा है. इट इज रियली नॉट ओके. हमें हर बात पे कंप्लेन लिखवानी चाहिए एंड द पुलिस शुड टेक एक्शन. गवर्नमेंट को भी इस तरह का कोई लॉ पास करना चाहिए और इन लोगों को दे शुड बी हैंग्ड टू डेथ राइट अवे. आई डोंट नो अगर रेप केसेस के आप कोर्ट कचहरी में भी क्यों लेके जा रहे हैं, बात कितनी लंबी चलेगी. Now, Sanam, you were also one of the very few talk show hosts from Pakistan जिन्होंने काजोल और शाहरुख खान का भी इंटरव्यू लिया था. So tell me a bit about how they are like people behind the scenes. क्योंकि हम काफी बार उनको कैमरा के सामने देखते हैं, लेकिन any moments that you would like to share with the audience? So I was super scared. From Pakistan, it was me. I went. Shaista, Sahid, हम तीनों गए थे अलग-अलग. जाहिर सी बात है. So I had a lot of pressure on. Like my channel had
told me earlier कि भाई we want this candid, we want this personal, we want to know about them, what do they do behind the screen, and I was like, how do I ask them such questions? You know, we're just going for the promotion. पता नहीं दिलवाले की promotion थी, मैंने कहा they would, because obviously they would expect me to talk to them and ask them about दिलवाले, but my channel wanted me to ask more. जाहिर सी बात है, we all get greedy when we're meeting such stars, we want to go candid. So मुझसे पहले उनके साहिर लोधी के साथ शो था, शाइस्ता के साथ था, तीसरे नंबर पे मेरा टाइम था. So मुझे इतना डर लगा था, मैंने कहा जब तक ये मेरे पास आएंगे the energy will be zero and they won't respond properly. It'll be like a 15-minute interview. Basically हमारा time slot था 30 minutes का. So now I see them walking and walking and I'm like, oh my God, so there are 2 bodyguards, 4 bodyguards with Shah Rukh Khan, and he's, you know, like I can, jitna wo Shah Rukh Khan chal ke kareeb aa raha hai, I'm like, oh my God, what am I going to say? What's going to happen? So I was getting super nervous. Obviously, I mean, that was like a big interview for me. So then he walks in, he was so down to earth, and Kajol बेचारी तो बिल्कुल, she was so like, कहाँ बैठना है? हमारे डायरेक्टर से पूछी थी, मैं जूते पहन लूं प्लीज, मैं जूते उतार लूं, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है. And I was like, man, do whatever you want to do, you know, don't ask us. So they were super sweet, super nice, and they took pictures with the entire crew. And I still remember, he's very nice. Like he took my husband's name, he took my dad's name. So and apart from that, आप जो भी सवाल कर रहे थे वो अच्छे से respond कर रहे थे. Kajol was also very friendly, and आखिर में हमें एक promo shoot करना था ना last में, so he had to say कि don't forget to watch Jago Pakistan Jago, and I had to say on Tuesday or something like that, and she had to say at 9 p.m. I just had to say on Tuesday, and then they said the lines, and जब मेरी बारी आई तो I fumbled, okay, and I'm just like, no, I froze actually. I froze. I was like quiet and I said, I'm so sorry. And then he's like, अब ये परेशान हो रही है ना, मैं इसको तंग करूँगा. So ना मेरे shoulder पे वो इस तरह से ना काना वो यूं करते रहे. So I was like, oh my God, don't do that. You know, you're making me nervous. But I think they're very nice people, and we have a BTS of that as well. Very comfortable to work with. That's great. That's great. It was a great experience. हाँ. अच्छा, जिस तरह मैं अपने इंट्रोडक्शन के अंदर भी मेंशन कर रहा था, सनम, you have come a long way in your acting career as well as the talk show host की भी gig थी आपकी. हमारे actors overall they have come a very long way. तो आप मुझे बताएं कि in what ways अभी भी आपको लगता है कि we are trailing behind as artists? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे we need improvement in your view? You know, Haider, you can't really compare apples with oranges. You know, their industry is huge. They've been there since a very long time. It is a part of their culture. They have acting schools. They have dance schools. वहाँ इन सब चीजों को मानते हैं, literally पूछते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. हमारे यहाँ तो इस तरह की चीज बिल्कुल भी नहीं है. ना हमारे कल्चर का पार्ट है ये, ना you know, हमारे पास इतने बड़े बड़े एक्टिंग स्कूल्स हैं या फिर बड़े बड़े डांस. हाँ, हमारे पास हैं. हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजों को सीखा है और इम्प्रूव किया है. तो हम लोग बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते. उनकी इकोनॉमी अलग है, उनकी इंडस्ट्री इतनी पुरानी, इतनी बड़ी है, हमारी कंपैरेटिवली छोटी है. बट इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि खुद के ड्रामे देखना पसंद नहीं करते, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा बहुत शौक से देखते हैं. यू नो, आई मीन, ये छोटी छोटी चीजों में हमें प्राइड फील करनी चाहिए. जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, को एक्टर्स हैं जो इंडिया जा चुके हैं, सबके मुंह से सुना है. उसके अलावा कितने इंडियंस को मैं जानती हूँ जो कहते हैं कि वो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे बहुत शौक से देखते हैं. तो हमारे पास कंटेंट है, हमारे पास स्क्रिप्ट है, हमारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे बड़ी रॉ फील देते हैं हमारे एक्टर्स भी. सो आई थिंक नो, वी कांट कंपेयर एट ऑल. वी आर नॉट बिहाइंड एनीबॉडी. वी आर जस्ट टेकिंग अ स्वीट टाइम टू बी वेयर वी शुड बी. बिल्कुल. Now, Sanam, you made a comeback to television with Qarar, essaying the role of a villain. और आपकी काफी अच्छी performance थी. मैंने आपका ड्रामा देखा. It was a very good performance. आप मुझे बताएं, did you really have to prove your merit as an actor playing roles? क्योंकि हमने आपको जिस तरह in your previous dramas, was it something that you were not used to doing? मतलब how was that experience like for you? Because it was definitely a different role for you, right? It was actually. And it was, let me tell you, it was a lot of fun doing all that I did. Better than crying on the screen.
But yeah, since मैंने इस तरह का character बिल्कुल भी नहीं किया, तो it was interesting, was something new for me कि मैं challenging भी था, और सब लोग मुझे मासूम सी लड़की रोती रहती है हमेशा, इस तरह जानते हैं, तो that's why I wanted to do something different. And मेरे लिए थोड़ा मुश्किल इस तरह था क्योंकि मैं अंडर ही करती हूँ, मैं ज्यादा ओवर नहीं करती है, आई कीप इट वेरी बेसिक एंड वेरी नेचुरल. तो मेरे डायरेक्टर की डिमांड थी कि नहीं, टेक इट मोर अप, one more notch up, and I was like, no, I don't want to do that. But basically he was like, Sanam, इस तरह तो तुम्हें सबने देखा है, तो मुझे completely different चीज दिखानी है. तो I was like, okay, fine. तो वो थोड़ा मुश्किल था मेरे, different था, but it was a lot of fun. And do you think this was primarily the reason why you decided to do Qarar, क्योंकि it was a very different character, या तो story भी आपको appeal की थी? Yeah, ज्यादातर मुझे character ज्यादा interesting लगा, मुझे था margin है कुछ करने का. So Sanam, आपने जिस तरह पहले जिक्र किया that you were playing these very innocent, naive type of characters, so did you ever fear that the typecast label will be thrown at you? Okay, so I've always had the choice कि मुझे कौन सा कैरेक्टर करना है, क्या स्क्रिप्ट करना है. इस तरह प्रोड्यूसर्स जो टाइप कास्ट करते हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं अभी? As an actor, the type of scripts that you were offered and you accepted them. हाँ, वही. So well, I do remember going to malls and bazaars, and that's when I realized that बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, क्यों बेटा, क्यों हमेशा रोने वाले कैरेक्टर्स कर रही होती, कुछ क्या प्रॉब्लम है जिंदगी में. तो that's when I realized कि ठीक है, अच्छा सही है, मैं कुछ डिफरेंट करती हूँ. But no, even in the past I feel like I have had the opportunity to do different characters, but I would choose such characters because I don't know why I liked them. मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लग जाती थी, ये मुझे मासूम बनना पसंद था, तो मैं खुद से करती थी ये वाले कैरेक्टर्स. बट देन आफ्टर द शो आई रियलाइज कि नहीं यार, मेरे ख्याल से कुछ डिफरेंट करना चाहिए. सो आई कुड एक्चुअली प्रूव दैट आई कैन डू अदर स्टफ टू, बिकॉज जब लोग आपको नहीं देखते डिफरेंट किस्म का कैरेक्टर करते हुए, तो उनको लगता है कि आप यही कर सकते हैं. And also, I felt like Qarar का character was different, and it gave me a lot of margin to act too. हमारी इंडस्ट्री में वेट का भी बहुत ज्यादा इशू है. We are very much reluctant when it comes to hiring plus size actors, चाहे वो females हो या वो males हो. तो आप मुझे बताएं, did you ever have to experience something like that? या तो overall आपकी क्या take है कि do you think we should be more inclusive as an industry when it comes to well, obviously we should, yeah, inclusive तो होना चाहिए. और but what made you ask that question? क्यों आपको ऐसे लगता है? क्योंकि I feel सनम के ये issue है. मेरे साथ भी personally ऐसा हो चुका है because I'm an actor myself. So it's not something that's aimed at you. It's something that I've personally experienced and I've seen personally. So it's not something कि बहुत चीज ये कम है हमारी इंडस्ट्री में. It's very much rampant, और हम ज्यादातर stick thin लोगों को ही चाह रहे होते हैं to be in our projects. So what is your take on that? So as I said, we're a growing industry, but let's just go a little more पीछे चले जाते हैं. सोसाइटी को देखते हैं, बचपन से देखते हैं. क्या हम नहीं बॉडी शेम करते थे? क्या हमारी फैमिली में बॉडी शेमिंग नहीं होती थी? क्या हम बचपन से सुनते हुए बड़े नहीं हुए हैं, मोटी है, मोटा है, ओए मोटे, ओए मोटी? You know what I mean? It has been happening since a long time, and you're right, it shouldn't happen. क्यों आपका टैलेंट बोलना चाहिए? क्यों हम इस तरह के अजीबोगरीब स्टैंडर्ड सेट किए हुए? बट देन डिफरेंट स्क्रिप्ट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस पे फिट इन होना भी जरूरी है. लेकिन बच्चों कंप्लीटली राइट, क्यों नहीं एक चबी लड़की या फिर एक हेल्दी सी लड़की, क्यूट सी लड़की क्यों नहीं विलन बन सकती, ये क्यों नहीं हीरोइन बन सकती? तो हाँ, इस तरह के सवालात हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब इन चीजों पे काम किया जा रहा है. अब ये टॉपिक्स उठाए जा रहे हैं, चाहे वो हमारी like, I don't want to name brands, but now there are brands that are picking up such issues, and like they are hiring plus size models. They want to they want to let the society know it's okay, it's not a big deal.
बट मेरे ख्याल से इन सब चीजों से ज्यादा हमारे जो जो कमेंट सेक्शन होते हैं जो भरे हुए होते हैं ना, उनके पास जो एडवाइस होती है देने के लिए, तो ना ही पूछे तो बेहतर है। बिल्कुल। सो मेरे ख्याल से ये चीज बचपन से ही हो रही है, और हम ही सिखाना पड़ेगा अपने बच्चों को, खुद को. बिल्कुल बिल्कुल. Sanam, This moving needs to on. stop. Yeah, bilkul, I agree. Sanam, the other issue is that women especially are subject to this. That once they give birth, especially once women are in the public eye, once they give birth, they're automatically assumed kiya jata hai कि they won't be able to return to the television screen या तो film के अंदर. So why is that कि हम automatically assume क्यों कर लेते हैं कि यार just because she has become a mother now she cannot step back into the public eye? अच्छा, I don't know why you're saying that. मुझे तो इस तरह का कहीं ना मुझे किसी ने बोला, ना मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की, बल्कि I'd like to share one thing with you. जब मैं अवार्ड्स कर रही थी 2016 में, हम अवार्ड्स होस्ट कर रही थी, तो जाहिर सी बात है कि सबको पता चल गया था that I'm expecting. तो I met Momna Dured over there. She was sitting with her. So I was just, she was passing by and I was like, oh hi, how are you? And she's like, oh, you're expecting? Okay, that's amazing. Congratulations, that's lovely. कोई बात नहीं, एक साल की तो बात है. Then you can, you'll start working again. तो मुझे तो इस तरह का कभी I mean, I'd love to share this with you, and it's amazing how you asked me this question. और मुझे याद आया कि मुझे तो किसी ने नहीं कहा, मुझे तो मोमना ने नहीं कहा, सुदाना अपन ने नहीं कहा बेटा बस अब तो गई, घर बैठो. You know what I mean? माइंडसेट की भी बात होती है, आप किन के साथ काम करें. बट अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखें, यू राइट, ऐसा लोग, सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है, ऐसा घर वाले भी आपको प्रेशराइज करते हैं. चाहे अगर कोई खातून है जो काम कर रही है बैंकिंग इंडस्ट्री में भी, कहीं भी कोई भी काम कर रही है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब बच्चा हो गया, अब आप बच्चे का ख्याल रखिए, अब काम, अब आप भूल जाए, अब आप काम छोड़ दें. तो ये माइंडसेट है पाकिस्तान में, इस तरह का माइंडसेट है. लेकिन फिर लड़की को स्ट्रांग होना चाहिए और बताना चाहिए कि यार मैं दोनों चीज बहुत अच्छे से कर सकती हूँ. अच्छा Sanam, after being a mother, what has motherhood really taught you as a person? मतलब, how has it changed your life? Well, it has taught me patience. It has taught me giving away. It has taught me caring. It has taught me loving intensely. It has taught me कि चीजें अल्लाह ताला कराता है. अल्लाह पे ज्यादा यकीन और ज्यादा, because we go through a complete transformation. वो जो 9 महीने होते हैं, जिस वक्त ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, उस वक्त जो बॉडीली चेंजेस हो रहे होते हैं, फिजिकली मेंटली भी, आप जिन चीजों से गुजर रहे होते हैं, एंड देन गिविंग बर्थ टू अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, दैट इज अ मिरेकल ऑल बाय इटसेल्फ. तो वो ही आपको उस वक्त आप इतने बेबस होते हैं ना हैदर, आप इतने बेबस होते हैं कि आप बस ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, आप कहते हैं कि अल्लाह मियां, मतलब वाओ, दिस इज अ कंप्लीट मिरेकल. उसके बाद फिर मैं जिंदगी में कभी भी किसी के लिए रात के बीच में ना उठूं, लेकिन वो एक अनब्रेकेबल बॉन्ड जो होता है, वो आपको, जब आपका खुद का बच्चा होता है तो आपको समझ आता है कि यार आपकी अम्मा आपसे कितना मोहब्बत करती है. बच्चा आपका रात के बीच में उठता है, यू वेक अप, क्या हुआ, you whatever life says, I'm there for her, I'm ready to do it, whether it's pick and drop or taking her to swimming classes or feeding her, changing her clothes, giving her a bath. I'm never tired to do things for her. I mean, this is just such a beautiful bond. I mean, it has taught me, because of her I've learned how to cook also. So बहुत सी ऐसी चीजें जो आप नहीं करना चाहते, वो आपको ये सिखा देती है. So motherhood is just amazing. Yeah, it makes you a fighter. It makes you a stronger person as well, because now you're not just living for yourself. Now it's not just your life. It makes you a better person, I believe. It makes you आपको झुकना भी सिखाती है. I know a lot of people, I can even quote दुआ मलिक. So मैं उनसे पहले मिली शो पे ना, तो वो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी उनसे इस तरह की कनेक्शन नहीं थी. तो I slightly felt कि थोड़ा सा arrogance है, ठीक है. And the next time I met her was after she gave birth to her child,
and there was a complete change in her attitude, the way she spoke. She was a completely changed person. So I believe ye maa ye cheez, maa banna ye cheez bhi Allah Taala sikhate hain. बिल्कुल, I agree with you. अच्छा, before concluding the interview, मैंने आपसे एक और issue पे भी take लेनी थी, nepotism, because many people have been talking about this. Conversation is ongoing regarding this. लेकिन then again, this is just my opinion, the people who are actually defending nepotism are the ones who are perpetuating it. It appears to be a very deep rooted issue in our industry. और हम जब भी मैंने अपनी इंडस्ट्री को देखा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देखा, it's like a very large family with strong connections. यहाँ पे Sitara, Noor Abbas, Bushra Ansari and her sisters, Aad Razami, the list is endless. तो आप मुझे बताएं, isn't nepotism doing a disservice to people, to young talent जिनके पास वो edge नहीं है to land you that audition, to land you that role? और मैंने ये भी देखा है कि कुछ actors जो कि अच्छे actors, उनकी acting ability शायद उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन they're still getting projects. So how deep rooted of an issue do you think nepotism is in Pakistan? Okay, so I have absolutely no connections. I don't have media industry background. मेरे कोई चाचा, मामू, खाला, अबू, अम्मी इंडस्ट्री में नहीं है. फिर भी मैं इंडस्ट्री में हूँ. फिर भी मैं for the longest time हम television network, one of the biggest channels के साथ associated थी on mainstream media पे. तो लेकिन आपकी बात भी सही है, मैं डिसएग्री बिल्कुल भी नहीं करूंगी. हाँ, नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन देखिए नेपोटिज्म से क्या होता है, इट जस्ट गेट्स यू अ चांस. इट इज एन इजियर वे टू स्लाइड इन, इट इज एन ओपनिंग. यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल है टू गेट टू सर्टन प्रोडक्शन हाउसेज और टू जस्ट गेट दैट वन चांस जहाँ कोई आपका ऑडिशन ले ले. हाँ, है मुश्किल, लेकिन आई बिलीव कि जहां हम नेपोटिज्म की बात करें, ये चीजें आपको चांस तो जरूर दिला देती है, लेकिन फॉर लॉन्गर पीरियड आप रह नहीं सकते. अगर आप अच्छा एक्टर नहीं है तो आपको क्यों कोई कास्ट करेगा? अगर आपने वो एक्स फैक्टर नहीं है तो प्रोड्यूसर आप पे क्यों पैसा लगाए? यू नो व्हाट आई मीन? इट्स ऑल मनी रिलेटेड, राइट? लाइक व्हाई वुड अ प्रोड्यूसर कास्ट समबडी क्योंकि वो किसी की भांजी है या किसी की कोई उनकी खाला है या जो भी है, किसी के अब्बू का, बी इट अहाद और एनीबडी. व्हाई वुड दे कास्ट यू? अगर उनको अपना फायदा दिखना है, दैट्स व्हाई दे कास्ट यू. तो मुझे लगता है, दूसरी बात, मैंने कितने सारे लोगों को, जिसमें से एक लड़की जो मेरे शो पे, मैं नाम नहीं लूंगी, मॉडल करती थी. लाइक व्हेन हम लोग इस तरह के शोज करते थे जहां वी हैव डिजाइनर्स कमिंग इन, सो वी नीडेड मॉडल्स ताकि वो उनके कपड़े डिस्प्ले कर सके. तो वहां आई थॉट कि एक लड़की में बहुत ज्यादा टैलेंट है और वो प्यारी सी भी है, टैलेंटेड भी है, लेकिन उसको मे बी इसको पता नहीं कि क्या करना चाहिए. सो आई स्पोक टू हर. मैंने कहा तुम मुझे अपना एक ऑडिशन दे दो ना. आई फॉरवर्डेड टू अ फ्यू पीपल एंड आज वो मतलब शी वर्कड हार्ड. ऐसा नहीं कि उसको फॉरन से लीड पे मिल गया, अब वो लीड पे आ रही है. पहले वो किसी की बहन बनी हुई थी, कभी कुछ बनी हुई थी. तो ऐसी बात नहीं है. हैदर, नेपोटिज्म जरूर आपको चांस दिलाती है, लेकिन you have to prove your ability and capability. True. ठीक है. To conclude, but on the same hand, हाँ, बहुत मुश्किल है to enter the industry. It is very tough. It is definitely tough. Okay, Sanam, to conclude, please talk to our viewers a bit about your new line of fragrance. क्या share करना चाहेंगे? So, मैंने लॉन्च किए 3 fragrances. एक है Heavenly Divine, which is this is my favorite these days. And then there's Forever Crush. I'm sorry, these are not brand new bottles. These are the bottles that I've been using since 2 months. And मेरी पहली वाली stock तो खत्म हो गया है. Also, there's one more which is called Mystic Fall. लेकिन क्योंकि वो खत्म हो गई है मेरे पास, I don't have the other one, which reminds me that I need to ask my people to give one to me. And there are just 3 fragrances at the moment. And they're available on our website, which is www.sanamjungofficial.com. And that's about it. I love them and I think you'll love it too. And thank you so much. जितने भी लोगों ने बहुत अच्छा review दिया है, people are loving it. So I love you guys too. Thanks a lot. Okay, Sanam, thank you so much. And I'll leave the link in my description box so that the viewers can check it out. So thank you so much for joining. It was a pleasure having you on the show. That is all for now, guys. Stay tuned for more on my official YouTube channel and Facebook page. Until then, take care. Allah Hafiz.